वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम सोशियल में जियोग्राफी में ये हमारा जो चैप्टर है इंडस्ट्री, इसके बारे में इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इंडस्ट्री, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री? इंडस्ट्री रिफर्स टू एन economic activity that is concerned with the production of goods like the iron and steel industry, the extraction of minerals like the coal mining industry, and the provision of service like the tourism industry. Next, very important question. What are the main factors which influence the location of an industry? Setting up an industry lead to the development and growth of that location. The factors that affect the location of industry are the easy availability of raw material and land, adequate supply of water and labor, access to power and transport, presence of market, and a good amount of capital. Sometimes the government also provide incentives like subsistence power, lower transport cost, and other infrastructural facilities. This is done to anchor industry to be established in economically background area. ये very important question है। इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये फोर्ट ग्लोस्टर इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ये आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर? जूट। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एग्रो बेसिड एंड मिनरल बेसिड इंडस्ट्री। एग्रो बेसिड इंडस्ट्री यूज प्लांट एनिमल्स बेसिड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल. इट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन रूरल एरिया. Food processing, vegetable oil, cotton, textile, dairy production, and leather industry are example of agro-based industry, whereas mineral-based industry are primary industry that use mineral ores as their raw material. It is a source of employment for both rural and urban population. Steel and iron industry and heavy machinery industries are example of mineral based industry. very important. इसके बाद public sector and joint sector industry. ये industry owned and operated by the governments are public sector industry. Steel Authority of India Limited and Hindustan Aeronautics Limited are example of public sector industry. On the other hand, joint sector industry are owned and operated by the state and individual or a group of individual. Maruti Airport Limited is example of joint sector industry. ये इम्पोर्टेंट है लेकिन नहीं देखने से भी चलेगा, लेकिन ये जो है ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द स्पेस प्रोवाइडेड. पहला तो हमारा आएगा रॉ मटेरियल. इसका आयरन और एंड कॉटन, एंड प्रोडक्ट जो अभी एंड होने जा रहा है, स्टील एंड क्लोथ्स, टेरिटरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, डायरी एंड शुगर, कॉटेज इंडस्ट्री, पोटरी एंड बास्केट वेविंग, कोऑपरेटिव, मदर डायरी एंड अमूल. द फुल फॉर्म ऑफ अमूल इज आनंद मिल्क यूनियंस लिमिटेड. फिर से ये आपका एग्जाम MCQ इम्पोर्टेंट है. व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज प्राइमरी इंडस्ट्री? स्टील, टेक्सटाइल, फिशिंग, ऑटोमोबाइल. फिशिंग होगा. और ये व्हिच इंडस्ट्री इज कॉल्ड सनशाइन इंडस्ट्री इन इंडिया? ये आपका आंसर रहेगा IT इंडस्ट्री. इसके बाद ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेवी इंडस्ट्री? शुगर, आयरन, स्टील, पेपर, लेदर. आयरन एंड स्टील इज द हेवी इंडस्ट्री. इसके बाद ये व्हाट इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? इंडस्ट्री रन्स ऑन ए स्मॉल स्केल ऑफ्टन इन होम और स्मॉल वर्कशॉप यूजिंग लेस कैपिटल एंड लेबर. तो आप सब एक बार देख लीजिए, अब वीडियो को स्किप करके ये सब लिख लीजिए. ये पूरा की पूरा जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को स्किप करके आप लिख लीजिए ये सब.
बाद इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी सेक्टर एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। ये आपका ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेस्ट ऑफ लक।